ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਰਮ 1 2024 ਸਬਜੈਕਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, +2 ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MCQ ਪਾਰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ऑस्मोटिक प्रेशर है, फ्री एनर्जी है, हीट ऑफ वेपोरेशन है, चेंज इन प्रेशर। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन है यूनिट ऑफ KB, दैट इज ऑल्सो नोन एज अपीलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं आप KB। सो ये जोड़े यूनिट्स है दैट इज़ ए कैल्विन kg पर मोल होंगे, जिस तरह आप पिछली प्रैक्टिस शीट में भी किया, कुछ वीडियोज़ भी किया, चैप्टर की वीडियो भी किया। सो इन्हों बहुत ध्यान ना करना क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होंगे हैं। नेक्स्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोल सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ R की वैल्यू गिवन है, टाइम T गिवन है, एंड मोलर सोल्यूशन वो 0.2 मोलर कंसनट्रेशन भी गिवन है। सो ये आप ईजीली ਜਿਹੜਾ ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लवेंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पाई इज इक्वल टू CRT डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर लवेंगे। नैक्सट साढ़े को ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोल एक्वा सोल्यूशन विच वन विल एक्सेप्ट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के आप देखते हैं जिद आई दैट इज़ वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सब तो ज़्यादा होया करेगी, दैट विल गिव द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लार्जेस्ट जाएगा। सो ये की है अलमीनीयम सल्फेट के साढ़े को सब तो ज़्यादा आई की वैल्यू है। सो हैंस ये की है कि साढ़े को आंसर जो करेक्ट आंसर दैट इज़ अ C ऑप्शन। नैक्सट दैट इज़ इन ए ड्राई सेल द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज रिड्यूस्ड, मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट +4 तो +3 रिड्यूस कर दी। सो करेक्ट आंसर +3, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Next, a cell constant and specific conductance is related to 1, that is a cell constant and specific conductance R is equal to rho L over A. This is also resistance. Specific conductance become equal to conductance multiple the cell constant. ठीक है जी। Next that is a Coleridge law. Next है Coleridge law. Coleridge law that is applicable to first option है the electrolyte dissolve in solvent of yellow low polarity only. B option to electrolyte as a temperature above room temperature. Third to electrolytic solution at infinite solution. Fourth to aqueous solution of a strong electrolyte. So correct answer that is a option C, to electrolytic solution at infinite dilution or solution. ठीक है जी। Next है half life period of a first order reaction, that is depend upon the first option है concentration of reactant, second है concentration of reactant or product, rate constant of a reaction, and none of these. So correct answer that is a rate constant of a reaction। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ T हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K दा रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration of a reactant, second half of the rate constant, next that is a sum for as the reactions and independent of the initial concentration of the reactant. So main correct answer that is a independent of the initial concentration। ठीक है जी। सो इस तो नेक्स्ट देखते हैं आप in the in respect of the equation K is equal to A e the power minus EA over RT in the chemical kinetics, which of the following is statement is correct? So where K is equilibrium constant, A is absorption factor, EA is energy of activation, R is a rate of constant. So correct answer that is a C option, EA is energy of activation। ठीक है जी।
Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ true false types. First that is the coordination number of cobalt in COEN thrice, that is 3 positive is 6. This is a true statement because in that is a didentate ligand or bidentate ligand. Next, all the ligand must contain at least one donor atom, that is also true statement. The oxidation state of iron in iron FCO5 is 0, that is also true statement. Next, trans isomer of COCl2 into positive show optical isomer, this is a false statement. Next, 3 ion are produced in CONH36Cl2 in solution, that is also a true statement. So this is the MCQ and true false type of questions. Next पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ईजिली सारे बच्चे कर सकते हैं. सो होपफुली सारे बच्चे आप करनगे. सो मेन पैराग्राफ रीड करांगे तो क्वेश्चन के आंसर देवांगे. नेक्स्ट है 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, जिस तरह नूमैरिकल है 18 ग्राम ग्लूकोज है. नेक्स्ट नूमैरिकल और ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है, फिर नूमैरिकल है दैन दैट इज़ हैनरी लो है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी है. कैन 2 मार्क्स अगेन नूमैरिकल है इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर का अगेन इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री. सो इसी तरह सारे पोर्शन कवर करते पे हैं. एंड नेक्स्ट सैक्शन सी है numerical portion and section D that is a 5 marks carrying question D and F block element chapter ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ. ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ numerical 18 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ 1 kg ਆਫ ਵਾਟਰ. ਸੋ WV ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 18 ਗ੍ਰਾਮ, MB ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 180 ਹੈ. ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ WA 1 kg ਹੈ, KB ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਸੋ ਡੈਲਟਾ TB ਇਕੁਅਲ ਟੂ KB into M. ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਵੀ नो एंड पुट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी का रिलेशनशिप इतने पुट करांगे तो डेल्टा TB सॉल्व करांगे तो सानू मिल जाएगा डेल्टा TB. नैक्सट दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने लिए आप फॉर्मूला यूज़ करांगे दैट इज़ अ TB इक्वल टू TB नोट प्लस डेल्टा TB. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ TB वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैलविन एज वेल एज सेंटीग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है. नेक्स्ट नूमैरिकल साढ़े को एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ए टू 43.95 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड. सो WV वैल्यू गिवन है. ठीक है. WA भी सानू गिवन है. B टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द सल्यूट कंपोनेंट एंड A इज़ यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट पार्टिकल. ठीक है. सो डेल्टा TF कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है. KF ऑलरेडी गिवन. MB ਨੂੰ कैलकुलेट करना by using the relationship delta TF become equal to KF into M. Put the value of molality and we can get the value of MB, that is after solving the numerical we will get the answer that is a 156 gram per mole. That is a correct answer. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट नूमेरिकल है ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3.1 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल एट 100.083 डिग्री सेंटीग्रेड. कैलकुलेट द वाटर फैक्टर ऑफ मोलैलिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑफ द सोल्यूशन. KB सानू गिवन है. सो गिवन WV सानू गिवन है, WA गिवन है, M2 गिवन है. सो मोलैलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग देयर रिलेशनशिप. सो इट विल गिव द वैल्यू. नेक्स्ट डेल्टा TB बिकम इक्वल टू KB इंटू M. KB ते M की वैल्यू आप पुट करांगे मोलैरिटी, वी विल गेट द आंसर डेल्टा TB. नेक्स्ट दैट इज़ ए डेल्टा TB कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द टैंपरेचर कंडीशंस. ठीक है. वो तो भी कैलकुलेट करांगे. सो I वैल्यू आप कैलकुलेट करांगे. I दैट इज़ ए ऑब्जर्व्ड डेल्टा TB कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पुट करांगे, सारे वैल्यू सॉल्व करांगे, वी विल गेट द आंसर 2.68. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेनरी लॉ कांस्टेंट और हेनरी लॉ. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर प्रेशर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दिस सोल्यूशन. सो P is directly proportional to X mole fraction and P become equal to KH to X KH that is a Henry constant. So ये एक easy method है. नेक्स्ट है साढ़े को डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. Molarity that is it is number of moles of solute dissolved per liter of solution. Molarity it is number of mole of solute dissolved in 1 kg of solvent. Molarity mole per liter. Molality that is a mole per kg. It decrease with increase in temperature and it is a molality that is a independent of the temperature term क्योंकि वॉल्यूम टर्म में नहीं आती है. नेक्स्ट देखते हैं आप
कैन वी स्टोर द कॉपर सल्फेट इन एन आयरन वैसल, जो प्रोडक्शन पोटेंशियल सानू वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं तो ई नोट सेल निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड करके, वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। सो अगर पॉजिटिव है इट मीन्स द रिएक्शन विल कंप्लीट एंड देयर इज ए करोजन विल अकर एंड वी कांट द स्टोर सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता साढ़े को क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगेन। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? And given atomic mass भी given है। So given that is the time is 10 minutes, can we change it into second? ठीक है, I also given, Q is equal to IT। सो इन्हें वैल्यू पुट करांगे, सॉल्व करांगे तो साढ़े को चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। सो कॉपर सल्फेट दैट विल डिसोसीएट इनटू आयन कॉपर टू पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन। सो ये नाल in this reaction copper 2 positive ion है 1 mole that is changes into the copper by using the 2 electron। ठीक है, so 2 into Faraday constant deposit on copper that is a 63.5 gram। so 900 कूलम जो डिपॉजिट करेगा कॉपर का that will can be calculated by this method and it will give the answer 0.2961 gram। so this is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इट इज defined as the speed with which the reactant are converted into the product and it is measured at a rate of decrease in concentration of a reactant। and reaction rate constant, it is a proportionality that a rate law and defined as the rate of reaction when concentration of reactant becomes unity। rate law, rate become equal to rate constant when concentration of reactant become unity or 1। it is depend upon an initial concentration rate of reaction and a rate constant that is it is independent upon initial concentration rate of reaction mole inverse time inverse and in case of reaction rate constant its unit depend upon the order of reaction they depend करते हैं units। ठीक है जी, नेक्स्ट है साढ़े को न्यूमेरिकल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड सानू दिता होया। सो ये लिए आप रेट कॉन्स्टेंट फाइंड करांगे तो बाई यूजिंग द रिलेशनशिप टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के कैन भी सॉल्व कर लाँगे 0.693 ओवर टाइम दी वैल्यू दैट विल गिव 4.8 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो melting points। so as we know in case of zinc cadmium mercury they have the fully filled electronic configuration that is belong to 12 group from the periodic table and electronic configuration in case of zinc 3d10 4s2 in case of cadmium 4d10 5s2 and mercury 5d10 6s2 fully filled electronic configuration these elements are soft and have low melting points and high volatile because having no unpaired electron, no bonding, no sharing and hence they have low melting points। so due to fully filled d subshell in the penultimate shell as such a dd overlapping are not possible, so having no melting and boiling point। so next question है transition metal have high melting and boiling points similarly due to presence of unpaired electron in their atom and the transition element are generally have strong interatomic interaction and hence stronger bonding between the atoms। this stronger bonding between the atoms are very strong as a result high melting and boiling point and hence enthalpy of atomization that is a high। next I define the linkage isomer। in case of linkage isomer that is the compound having same molecular formula but differ in the mode of attachment of the ligand to the central metal atom or ion। for example CuNH3 5 ठीक है NO2 and Cl and CuNH3 5 ONO and Cl। ठीक है, लिंकेज ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ਦੇ IUPAC नेम ਲਿਖਾਂਗੇ। सो दिस इज़ द नेम अगर ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करांगे तो 3 आ जाएगी साढ़े को हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सिमिलरली ये भी आप निकालेंगे तो कॉमन नाम आ जाएगा पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्योंकि अमोनिया जीरो ऑक्सीजन स्टेट है Cl-1 है Cl-1 है। ठीक है, सो ये आप सोल्व कर लवेंगे। सो नेक्स्ट IUPAC नेम फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिक्विड आयरन बन जाता इस करके 8 लग जाता।
Similarly, potassium trioxalitophorate आ जाएगा. Next, that is the reducing and non-reducing sugar. So all those carbohydrates which reduce the Fehling solution to red ppt of Cu2O and tolerant resin to metallic silver, that is referred as a reducing sugar, which doesn't show this test, that is a non-reducing sugar. Reducing sugar example glucose, lactose, maltose है तो other sucrose थे statues है. Next question है, why can't vitamin C be stored in our body? Because vitamin C, that is a water soluble है, and water soluble readily excreted by the urine, and hence it cannot be stored in our body. Next question है साढ़े को, calculate the EMF of a cell. साढ़े को next question, that is calculate the EMF of a cell at 25 degrees centigrade. So साढ़े को zinc to positive, cell representation is given here, and given reduction potential of zinc to positive to zinc and iron to positive to iron given, and log 2 value are also given. So firstly write that anode, that is oxidation half selection. In the cell representation, that is the left hand side, that is the anode, oxidation occur, zinc to positive 2 electron, and in the right side of cell representation, that is the cathode, where the reduction half selection occur. So write the equation. Then overall cell reaction, this is overall cell reaction. Then according to Nernst, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 over n log concentration of product over concentration of reactant. So E naught cell also calculated E cathode minus anode, we will get the value. Then E cell value can be calculated from the Nernst equation, put all the values, log value, and then we solve it, we will get the 0.31 volt is the answer. So next one, again next question, write the Nernst equation, given cell representation, magnesium and copper are given, and similarly reduction potential of value magnesium and copper are also given. Again start from at anode oxidation half cell reaction, then at cathode reduction half cell reaction, then overall cell reaction. After that, according to Nernst E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over 2 log concentration of product over reactant. So first we calculate the E naught cell, that is E cathode minus anode, then solve the E cell, so we will get the value 2.71 volt is the answer. So next question, that is according Kohler's law. So the molar conductivity at infinite dilution for sodium iodide है, sodium acetate है, and magnesium acetate become value are given, and find the molar conductivity of MgI2. So magnesium acetate, sodium iodide and sodium acetate value are given, so calculate magnesium iodide. So add the equation number second and first and second add करेंगे, then subtract from, that is from third equation, ठीक है. So we will get this value, so this is the answer, ठीक है. So this is become easy method. Next, a first order reaction takes 16 minutes in 50% completion, and how much time will it take for completion of 75%? So as we know, first order reaction K is equal to 2.303 over K log A naught over A. So for 50% completion, first step K is equal to 2.303 over 16, so log आप सोल्व कराएंगे साढ़े को आंसर आ जाएगा. एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर 75% completion, सो इतनी वैल्यू सारी पुट कराएंगे तो सोल्व कराएंगे, ठीक है. सो साढ़े को लास्ट आंसर आ जाए, दैट इज 32 मिनट्स, ठीक है. नेक्स्ट है द रेट ऑफ अ रिएक्शन 2A plus B to form A to B has a rate law, ठीक है जी. रेट सन गिवन है एंड रेट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू 0.50 मोल पर लीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम 0.60 and concentration of B become 0.05 mole per liter. And second step, when concentration of A and B reduced to 1/4 value. So first of all, a rate value are given, and the rate of reaction will become, in the first step
when put the value of K and A, we will get the answer. ठीक है, 0.18 mole per liter per second. Similarly for the second, when concentration of A and B are reduced to 1/4 value, A become equal to 1/4 of A. ठीक है, so any value हो जाएगी 0.15, so rate become equal to 0.5 multiple 0.0225 and we will get the answer. So this is the answer. So next is question, that is from D and F block element. So why transition metal form alloys with other transition metal easily? So transition metal and their many compound act as good catalyst. So first question, the answer, the tendency of transition metal to form alloys can be explained, that is on the basis of atomic sizes. The atomic size of transition metal are very similar and hence their crystal lattice atom of one metal can readily replace with the atom of another transition metal and result in the formation of alloys. Example, steel, that is the iron alloy with the carbon. Second, transition metal, that is act as good catalyst. Many transition metal and their compound are found to act as good catalyst because of the presence of incomplete d subshell, and they can form the unstable intermediate product with the reactant. And for example, final divided nickel, platinum, palladium, which are used as catalyst in the hydrogenation. Similarly, iron, molybdenum are used as catalyst in the manufacture of ammonia from Haber process in nitrogen and hydrogen gas. Okay. So next part, that is the question, why copper 1 is a diamagnetic and copper 2 is paramagnetic in nature. So electronic configuration of copper, that is a 3d10 4s1. So copper can be written in spin, then copper 1 positive, that is a 3d10, so it can be written here. And in case of copper 2 positive, written 3d9, so it will show that there is one unpaired electron, and copper 1, that is copper 1 positive, there is no unpaired electron, hence it is a diamagnetic in nature. Okay. On the other hand, copper 2, that is a 3d9, so this is an unpaired electron and hence it is a paramagnetic in nature. So this is important question. Next, that is write the general electronic configuration of transition and inner transition elements. The general electronic configuration of d block element or transition element become n-1 d1 to 10 ns1 to 2. So in the where n-1, that is a penultimate shell, and d orbital have 1 to 10 electron, and the outer s orbital may have 1 or 2 electrons. The general electronic configuration f block element n-1 to f1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2. Okay. So this is the general electronic configuration. Next, the transition metal have tendency to form complex compound. So transition metal have tendency to form complex compound because of two reasons. First one, because of presence of vacant n-1 d orbital which can accept one or more electron pairs from the ligand. Second, that is a high charge density of the transition metal. Third, form complex because of presence of unpaired electron from one metal to another metal. Both have tendency to share and form a bond that will form a complex which is more stronger due to presence of unpaired electron. Next question है, why is a higher oxidation state of metal exhibited in its oxide or fulleride? So in case of due to the smaller size, high electron activity of oxygen and fullerene can oxidize metal to the higher oxidation state. क्योंकि oxygen to fullerene can oxidize कर जाते due to high electron activity and small size. Next question है, which is a stronger reducing agent, chromium 2 positive and iron 2 positive, and why? So in case of chromium 2 positive, stronger reducing agent reason, in case of chromium 2 positive, that is a 3d4 electronic configuration, and it when 3d4 when it release the electron, it will form a chromium 3 positive 3d3. And similarly, reaction which iron 2 positive, that is having the 3d6 and having the 4 unpaired electron, and when it will form iron 3 positive, it will have a 5 unpaired electron. So in a medium like water, d3 is more stable
ठीक है। D3 ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू D5। दिस इज़ बिकॉज D3 T2G ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਫੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ T2G ਲੈਵਲ ਹਾਫ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਦ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ agent formation one day, and chromium 2 positive, that is a stronger reducing agent. So this is the all over solution of the first test paper September. So this is the test paper ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ solve ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ solve ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ fully। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਲ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ the students. Thank you.